तूफान उठे, मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दी आवाज है, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, लाखों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है, नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन माटी में, हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी भरी पार्टी में, महंगाई को झुका के मानेंगे, हारेंगे बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे, लड़ाएंगे, हे उन्नति का हाथ बढ़ाना है, सद्भाव का साथ बढ़ाना है, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन
तूफान उठे मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दी आवाज है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा एक तेरा कदम एक मेरा कदम मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली लाखों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है नफरत ना होने देंगे इस पावन पावन माटी में हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी परिपाटी में महंगाई को झुका के मानेंगे बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे हे उन्नति का हाथ बढ़ाना है सद्भाव का साथ बढ़ाना है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा एक मेरा कदम मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 They discussed issues regarding Grameen banks, particularly strengthening of rural credit and extending of banking services under the public sector. So 40 crore customers are benefited by this Grameen Bank, sir. With 22,500 branches, it is a very big rural banking network. Now they are proposing privatization. We are opposing. Rather, we are demanding formation of National Rural Bank. When a bank say like Grameen gets privatized, Yes, sir. how many of the people who are working will lose their job? The job will be only question of 1,50,000, but 40 crore customers will, the priority sector people are there. All 40 crore. Rural. They are 90% of the branches in rural areas. Thereby, it will the objective of the RRBs will be diluted, and the RRBs, the thrust, the focus of rural areas will be diluted. Once a private shareholder comes into the bank, they will close down most of the branches. The services to the rural poor and downtrodden will be affected. They need to be protected under public sector because they are in profit as a whole. The process of privatization has started. Just now, up to 49% the provision has been made. We are very happy. Some national level political leader is taking an initiative to join all the people, all section of the people. We want unity of all the people. Which part of Indian Railways are they privatizing? Railway stations, sir. Okay. Railway workshop, railway medical hospitals, railway establishment going to be privatized. Today, in the Bharat Jodo Yatra, we have met Sri Rahul Gandhi ji. We have explained in detail about the privatization of Indian Railways. In the history of 170 years of Indian Railways, we never seen and we never heard the privatization of Indian Railways. So we are opposing that privatization. When are they planning to do this?
Are they already doing slowly? Yes, sir. Slowly. Who are they giving them to? Big companies or small companies? No, big companies, sir. Ambani, Adani, and all their affiliated companies. They have privatized by the Narendra Modi's government. So Adani is getting railways also? Yes, sir. These private trains already introduced in the Indian Railways. Trains have been used? Yes, sir. Adani trains? Yes, sir. Adani. 151 trains. Total 151 trains have been privatized, sir. On that occasion, we have submitted the memorandum to Sri Rahul Gandhi ji, comprising 3 demands. One is against privatization of Indian Railways and न्यू पेंशन सिस्टम को अरेंज करना है, और तीसरा है रेलवे में जो वैकेंसीज है उनको भर्ती करने के लिए हम लोग राहुल गांधी जी से बात हुआ था, टू सेव द इंडियन रेलवेज एंड आल्सो टू सेव द नेशन इंटरेस्ट. My name is Sandeep Gondala in California, San Francisco Bay Area లో ఉంటాను. I work for Stanford and I'm also a member of Indian Overseas Congress. So 31st I was there, Bharat Jodo Yatra, and నాది ఒక చిన్న ప్రయత్నం లాగా distributing around 2000 copies of this book on Nehru. It is ప్రపంచ మేధావుల దృష్టిలో నెహ్రూ ఏం మాట్లాడారు నెహ్రూ గురించి. That is a little effort, I think, which I thought I can contribute it, because ఈయనే విజన్ వల్లనే ఇవాళ భారతదేశం ఎక్కడైతే ఉందో అప్పుడు 2017లో రాహుల్ గాంధీ గారు యూసీ బర్క్లీకి వచ్చారు. అక్కడ ఒక 1000 మంది స్టూడెంట్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు. అండ్ ఐ యామ్ టోటలీ ఇంప్రెస్డ్ బై వాట్ హీ సెడ్. ఐ విల్ బి వెరీ అన్అపాలజెటిక్ సపోర్టర్ ఆఫ్ రాహుల్ గాంధీ. ఆ రోజు నుంచి నేను డిసైడ్ అయ్యాను. ప్రపంచ దేశాలలో ఇప్పుడు మేము బయట దేశాలలో ఉంటాం కాబట్టి దేశం మొత్తంలాగా చూస్తాం మేము. సో ఇండియాలో ఏ చెడు జరిగినా కానీ మాకు బాధ అవుతుంది. భారతదేశము 100కు పైగా దేశాలకి తిండి పెట్టే దేశం లెక్క తయారైంది. అటువంటి దేశంని ఇలా అన్నం దొరుకుతలేదు, హంగర్ ఇండెక్స్లో పాకిస్తాన్ శ్రీలంక కంటే తక్కువ పడిపోయింది అనే న్యూస్ చూస్తే బాధ అయింది. సో ఇవాళ ఒక నాయకుని గురించి రాష్ట్రంలో కానీ కేంద్రంలో కానీ మాట్లాడాలి అని అంటే భయపడుతున్నాం. అంటే ఎటు పోతుంది సమాజం? టీవీ ఛానల్ భయపడుతున్నాయి, ఎటు పోతుంది? ఇవన్నిటిని అడ్రస్ చేస్తూ రాహుల్ గాంధీ గారు ఈ పాదయాత్ర తీసుకున్నారు. అలసట అనేది మీకు యాత్రలో నడుస్తుంటే తెలియదు. ఎందుకంటే యూ గెట్ టు సీ సో మెనీ పీపుల్, ఎస్పెషలీ 18, 16, 19, 20, 21 year old పీపుల్ ఇక్కడ భారత్ జోడో యాత్రలో రాహుల్ గాంధీకి తోడుగా నడుస్తుంటే చాలా సంబరం అనిపించింది. कांग्रेस हुकूमत जब थी हम उसको खबर नहीं दी. आज हम पछता रही कि ये बीजेपी हुकूमत जो आने से परेशानियां हो रही. आज का दिन मेरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन दिन बोल सकता हूँ इसको मैं, जो मुझे आज राहुल गांधी जी से मिलने का मौका मिला. उनसे बहुत तफसील में बात हुई. जो 2 लाख की रोजगार की बात कर रहे थे, आज तक भी किसी भी एक बंदे को जॉब नहीं मिला. मैंने इनको ये मेमोरेंडम दिया, इसमें सभी सारे डिटेल है स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट जो वादे करके आई थी, मगर आने के बाद वो सभी सारे वादे भूल चुके. तो स्टेट गवर्नमेंट आने से पहले 2 लाख रोजगार देने की बात करके आई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके आई थी, मगर वो आज तक पूरा नहीं हुआ. मौजूदा जो हालात है इस मुल्क के, काफ़ी बद से बदतर हालात है. इस पर थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आम इंसान के ऊपर है. जो लो पॉवर्टी लाइन ले लीजिए, मिडिल क्लास ले लीजिए, वो काफ़ी सफ़र हो रहे हैं इस मुल्क में. राहुल जी ने इस मेमोरेंडम को खास तौर पर पढ़ा है, पढ़ के मुझसे डिस्कशन किया कि हम इस पर गौर करेंगे. तो मुझे उम्मीद है राहुल जी से कि आने के बाद वो हमारा इस मेमोरेंडम को फॉलो करेंगे. फिर से एक बार राहुल जी कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत करेंगी तो हो सकता है ये भारत का बहुत ही अच्छा मुस्तकबिल रहेगा. मेरा नाम रोहित है, मैं यहाँ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखता हूँ. मेरा नाम प्रवीण कुमार है सर. मैं यहाँ पे लाइटिंग का देखता हूँ भारत जोड़ो यात्रा में. मेरा नाम मनदीप है. मैं यहाँ पे पिंक जोन, लेडीज़ की सारी कंप्लेंट्स को हैंडल करना वो मेरे अंडर है. सीआरपीएफ वाले हैं ना, उनको सारा ये देना सारा. हाँ ठीक है अभी करवा दे रहा हूँ. 2 मिनट को दे रहा हूँ मैं आपको. ठीक है
सुबह 3:30 बजे हम उठते हैं, उसके बाद 6 बजे यात्री निकलते हैं। हम डिसमेंटल करके नेक्स्ट लोकेशन पहुंच के अपनी टीम की जो एरिया है आपको पहले कवर करते हैं, यात्रियों को सेफ महसूस होने के लिए। हमारे पास एक एरिया होता है अराउंड 1 लाख स्क्वायर फीट का, जिसकी सारी लाइटिंग हमें करनी होती है। बेसिकली सबसे ज़्यादा इशू है वो है लेडीज़ वॉशरूम का, और वहाँ पे पानी फिल करवाना, उसकी हाउसकीपिंग करवानी, लेडीज़ जोन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी, और उनकी कंप्लेंट्स जो भी होती हैं लेडीज़ की वो सब हैंडल करना, उनको रिजॉल्व करना। यात्रियों के लिए समझो कि हम एक रोज नया गांव बसाते हैं। एक बार भाई एक कंटेनर जोन में आओ और एक बार देखो कि कहीं पर कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। जैसे हम 2 महीने से यात्रियों के साथ हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हमारे एक परिवार है। और हमने ये चीज़ देखी है, जितनी लेडीज़ हैं सब हमको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम उनके छोटे भाई हैं। कोई फेस्टिवल या किसी का बर्थडे होता है, हम यहीं पर ही आपस में सेलिब्रेट करते हैं, तो कोई हमें ऐसा लगता ही नहीं, हम तो एंजॉय करते हुए काम कर रहे हैं। पब्लिक का प्यार देखा, लोगों की हिम्मत देखी, राहुल जी की हिम्मत देखी। 30-30 किलोमीटर रोज वॉक करनी, पब्लिक को साथ लेके चलना, छोटा हो बड़ा हो सबको साथ लेके चलना। इस यात्रा में हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोगों से मिल रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। हम उन्हें लैंग्वेज समझ आए ना है, लेकिन हम उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। उससे हमें एक चीज़ का पता लगा है कि हाँ, अगर कुछ करना है तो हिम्मत दिखाओ, सब कुछ होगा। दांडी यात्रा के बाद आई थिंक ये सबसे बड़ी यात्रा है, और इस यात्रा से बदलाव होगा और 100% होगा, जिसका हिस्सा हम भी हैं, और हम भविष्य में कह सकते हैं कि हम उस रैली का हिस्सा हैं जिसने भारत को बदला है। और इस सफर में जो प्यार और मोहब्बत हम आपस में कायम करेंगे वो हमेशा रहेगा। हमारी तरफ से कुछ भी गलतियां, कभी कुछ हुई, गुस्से में किसी ने कोई भारत यात्री या किसी ने भी कुछ बोला, उसके लिए माफ़ी, और ये रिश्ता हमेशा बना रहे प्यार और मोहब्बत के लिए। My name is Mohammad Abdul Rahman from Kerala. I started my walk from Karnataka, and I'll be walking till Kashmir. It is a yatra for the unity of the people. One thing is that discrimination on the basis of religion, on the basis of caste, and the youth is very angry. The government is not creating any job opportunities. आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। The 2 crore job which Modi have offered is nowhere. Lack of health sector also failed. As a citizen, I can't see this all things because we want a better life, and for a better life, whatever we want to do, we have to step out to take an action against this injustice government. This yatra is very important. He is resolving a lot of problems which the citizen of this country or the people of this country is facing. So you must come forward and be part of this for this all reason. Someone who has a heart for people, especially the poor. सच बोलना पड़ेगा, प्यार बढ़ाना पड़ेगा, नफरत छोड़ना पड़ेगा, और किसी को डरने का नहीं। सब लोग हाथ से हाथ मिलाकर इस देश को बनाएंगे। ये देश रहेगा तो हम रहेंगे। United effort from all the leaders is going to be a game changer. It's a great initiative. It's a people movement, I can say. He is coming all the way to listen our issues, to see our problems. నేను ఒక మహిళగా మహిళలపైన జరుగుతున్నటువంటి అత్యాచారాలన్నిటికీ, మహిళల్లో కూడా ఎక్కువ దాడులు అణగారిన వర్గాలైనటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీలపైన ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. చెప్పుకోవడానికి కూడా భయపడుతున్నారు. చెప్పి వచ్చిన 1-2 కేసులను కూడా రాజకీయ పలుకుబడితో వెనుక వేయడం జరుగుతుంది. రాజ్యాంగ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో, సుప్రీంకోర్టు కావచ్చు, ఎన్నికల కమిషన్ కావచ్చు, అవన్నీ కూడా వాటిని
దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. The wealth whatever created by the Congress has been being destroyed by the present regime, sir. వీడు దళితుడుగానే ఉంటున్నాడు, దళితుడుగానే వివక్షకి లోనవుతున్నాడు, కానీ ప్రొటెక్షన్ మాత్రం అతనికి దొరకటం లేదు. ఒకరికి ఒక విధంగా ఇంకొకరికి ఒక విధంగా లేకుండా మహిళలకి జరుగుతున్నటువంటి అత్యాచారాలన్నిటిపైన కూడా చట్టరీత్యా కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగంలో ఏవైతే చట్టాలు ఉన్నాయో అవి ప్రజాస్వామికంగా అమలు చేయాలని రాహుల్ గాంధీ చెప్పడం జరిగింది. Rahul is a world-class citizen. He has world-class outlook. He is very
तूफान उठे मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दी आवाज है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा एक मेरा कदम मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली झांको रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन माटी में हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी परिपाटी में महंगाई को झुका के मानेंगे हारेंगे बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे लड़ाएंगे हे उन्नति का हाथ बढ़ाना है सद्भाव का साथ बढ़ाना है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा एक मेरा कदम मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली
मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दी आवाज है, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, झांकों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है, नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन माटी में, हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी भरी पार्टी में, महंगाई को झुका के मानेंगे, बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे, ये उन्नति का हाथ बढ़ाना है, सद्भाव का साथ बढ़ाना है, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। To discuss issues regarding Grameen banks, particularly strengthening of rural credit and extending of banking services under public sector. So 40 crore customers are benefited by this Grameen Bank, sir. With 22,500 branches, it is a very big rural banking network. Now they are proposing privatization. We are opposing. Rather, we are demanding formation of national rural bank. When a bank say like Grameen gets privatized, Yes, sir. how many of the people who are working will lose their job? The job will be only question of 1,50,000, but 40 crore customers will, the priority sector people are there, all 40 crore. Rural. They are 90% of the branches in rural areas. Thereby, it will the objective of the RRBs will be diluted, and the RRBs, the thrust, the focus of rural areas will be diluted. Once a private shareholder comes into the bank, they will close down most of the branches. The services to the rural poor and downtrodden will be affected. They need to be protected under public sector because they are in profit as a whole. The process of privatization has Started. Just now, up to 49% the provision has been made. We are very happy. Some national level political leader is taking an initiative to join all the people, all section of the people. We want unity of all the people. Which part of Indian Railways are they privatizing? Railway stations, sir. Okay. Railway workshop, railway medical hospitals, railway establishment going to be privatized. Today in the Bharat Jodo Yatra, we have met Sri Rahul Gandhi ji. We have explained in detail about the privatization of Indian Railways. In the history of 170 years of Indian Railways, we never seen and we never heard the privatization of Indian Railways. So we are opposing that privatization. When are they planning to do this?
Are they already doing slowly? Yes, sir. Slowly. Who are they giving them to? Big companies or small companies? No, big companies, sir. Ambani, Adani, and all their affiliated companies. They have privatized by the Narendra Modi's government. So Adani is getting railways also? Yes, sir. Private trains already introduced in the Indian Railways. Trains have been introduced? Yes, sir. Adani trains? Yes, sir. Adani. 151 trains? Total 151 trains have been privatized, sir. On that occasion, we have submitted the memorandum to Sri Rahul Gandhi ji, comprising 3 demands. One is against privatization of Indian Railways and न्यू पेंशन सिस्टम को अरेंज करना है, और तीसरा है रेलवे में जो वैकेंसीज है उनको भर्ती करने के लिए हम लोग राहुल गांधी जी से बात हुआ था, टू सेव द इंडियन रेलवेज एंड आल्सो टू सेव द नेशन इंटरेस्ट. My name is Sandeep Bangala. In California, San Francisco Bay Area లో ఉంటాను. I work for Stanford and I'm also a member of Indian Overseas Congress. So 31st I was there, Bharat Jodo Yatra, and నాది ఒక చిన్న ప్రయత్నం లాగా distributing around 2000 copies of this book on Nehru. It is ప్రపంచ మేధావుల దృష్టిలో నెహ్రూ ఏం మాట్లాడారు నెహ్రూ గురించి. That is a little effort, I think, which I thought I can contribute it, because ఈయనే విజన్ వల్లనే ఇవాళ భారతదేశం ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ 2017లో రాహుల్ గాంధీ గారు యూసీ బర్క్లీకి వచ్చారు. అక్కడ ఒక 1000 మంది స్టూడెంట్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు. అండ్ ఐ యామ్ టోటలీ ఇంప్రెస్డ్ బై వాట్ హీ సెడ్. ఐ విల్ బి వెరీ అన్అపాలజెటిక్ సపోర్టర్ ఆఫ్ రాహుల్ గాంధీ. ఆ రోజు నుంచి నేను డిసైడ్ అయ్యాను. ప్రపంచ దేశాలలో ఇప్పుడు మేము బయట దేశాలలో ఉంటాం కాబట్టి దేశం మొత్తం లాగా చూస్తాం మేము. సో ఇండియాలో ఏ చెడు జరిగినా కానీ మాకు బాధ అవుతుంది. భారతదేశము 100కు పైగా దేశాలకి తిండి పెట్టే దేశం లెక్క తయారైంది. అటువంటి దేశంని ఇలా అన్నం దొరుకుతలేదు, హంగర్ ఇండెక్స్లో పాకిస్తాన్ శ్రీలంక కంటే తక్కువ పడిపోయింది అనే న్యూస్ చూస్తే బాధైంది. సో ఇవాళ ఒక నాయకుని గురించి రాష్ట్రంలో కానీ కేంద్రంలో కానీ మాట్లాడాలి అని అంటే భయపడుతున్నాం. అంటే ఎటు పోతుంది సమాజం? టీవీ ఛానల్ భయపడుతున్నాయి, ఎటు పోతుంది? ఇవన్నిటిని అడ్రస్ చేస్తూ రాహుల్ గాంధీ గారు ఈ పాదయాత్ర తీసుకున్నారు. అలసట అనేది మీకు యాత్రలో నడుస్తుంటే తెలియదు. ఎందుకంటే యూ గెట్ టు సీ సో మెనీ పీపుల్, ఎస్పెషలీ 18, 16, 19, 20, 21 year old పీపుల్ ఇక్కడ భారత్ జోడో యాత్రలో రాహుల్ గాంధీకి తోడుగా నడుస్తుంటే చాలా సంబరం అనిపించింది. कांग्रेस हुकूमत जब थी हम उसको खबर नहीं दी. आज हम पछता रही कि ये बीजेपी हुकूमत जो आने से परेशानियां हो रही. आज का दिन मेरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन दिन बोल सकता हूँ इसको मैं, जो मुझे आज राहुल गांधी जी से मिलने का मौका मिला. उनसे बहुत तफसील में बात हुई. जो 2 लाख की रोजगार की बात कर रहे थे, आज तक भी किसी भी एक बंदे को जॉब नहीं मिला. मैंने इनको ये मेमोरेंडम दिया, इसमें सभी सारे डिटेल है स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट जो वादे करके आई थी, मगर आने के बाद वो सभी सारे वादे भूल चुके. तो स्टेट गवर्नमेंट आने से पहले 2 लाख रोजगार देने की बात करके आई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके आई थी, मगर वो आज तक पूरा नहीं हुआ. मौजूदा जो हालात है इस मुल्क के काफ़ी बद से बदतर हालात है. इस पे थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आम इंसान के ऊपर है. जो लो पॉवर्टी लाइन ले लीजिए, मिडिल क्लास ले लीजिए, वो काफ़ी सफ़र हो रहे हैं इस मुल्क में. राहुल जी ने इस मेमोरेंडम को खास तौर पर पढ़ा है, पढ़ के मुझसे डिस्कशन किया कि हम इस पर गौर करेंगे. तो मुझे उम्मीद है राहुल जी से कि आने के बाद वो हमारा इस मेमोरेंडम को फॉलो करेंगे. फिर से एक बार राहुल जी कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत करेंगी तो हो सकता है ये भारत का बहुत ही अच्छा मुस्तकबिल रहेगा. मेरा नाम रोहित है, मैं यहाँ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखता हूँ. मेरा नाम प्रवीण कुमार है सर. मैं यहाँ पे लाइटिंग का देखता हूँ भारत जोड़ो यात्रा में. मेरा नाम मनदीप है. मैं यहाँ पे पिंक जोन, लेडीज़ जोन, लेडीज़ की सारी कंप्लेंट्स को हैंडल करना वो मेरे अंडर है. सीआरपीएफ वाले हैं ना, उनको सारा ये देना सारा. हाँ ठीक है, अभी करवा दे रहा हूँ. 2 मिनट को दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है. So
सुबह 3:30 बजे हम उठते हैं, उसके बाद 6 बजे यात्री निकलते हैं। हम डिसमेंटल करके नेक्स्ट लोकेशन पहुंच के अपनी टीम की जो एरिया है आपको पहले कवर करते हैं, यात्रियों को सेफ महसूस होने के लिए। हमारे पास एक एरिया होता है अराउंड 1 लाख स्क्वायर फीट का, जिसकी सारी लाइटिंग हमें करनी होती है। बेसिकली सबसे ज़्यादा इशू है वो है लेडीज़ वॉशरूम का, और वहाँ पे पानी फिल करवाना, उसकी हाउसकीपिंग करवानी, लेडीज़ जोन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी, और उनकी कंप्लेंट्स जो भी होती हैं लेडीज़ की वो सब हैंडल करना, उनको रिजॉल्व करना। यात्रियों के लिए समझो कि हम एक रोज नया गांव बसाते हैं। एक बार भाई एक कंटेनर जोन में आओ और एक बार देखो कि कहीं पर कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। जैसे हम 2 महीने से यात्रियों के साथ हैं, हमें ऐसा महसूस है कि ये हमारे एक परिवार है। और हमने ये चीज़ देखी है, जितनी लेडीज़ हैं सब हमको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उनके छोटे भाई हैं। कोई फेस्टिवल या किसी का बर्थडे होता है, हम यहीं पर ही आपस में सेलिब्रेट करते हैं, तो कोई हमें ऐसा लगता ही नहीं, हम तो एंजॉय करते हुए काम कर रहे हैं। पब्लिक का प्यार देखा, लोगों की हिम्मत देखी, राहुल जी की हिम्मत देखी, 30-30 किलोमीटर रोज वॉक करनी, पब्लिक को साथ लेके चलना, छोटा हो बड़ा हो सबको साथ लेके चलना। इस यात्रा में हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोगों से मिल रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। हम उन्हें लैंग्वेज समझ आए ना है, लेकिन हम उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। उससे हमें एक चीज़ का पता लगा है कि हाँ, अगर कुछ करना है तो हिम्मत दिखाओ, सब कुछ होगा। दांडी यात्रा के बाद आई थिंक ये सबसे बड़ी यात्रा है, और इस यात्रा से बदलाव होगा और 100% होगा, जिसका हिस्सा हम भी हैं, और हम भविष्य में कह सकते हैं कि हम उस रैली का हिस्सा हैं जिसने भारत को बदला है। और इस सफ़र में जो प्यार और मोहब्बत हम आपस में कायम करेंगे वो हमेशा रहेगा। हमारी तरफ से कुछ भी गलतियाँ, कभी कुछ हुई, गुस्से में किसी ने कोई भारत यात्री या किसी ने भी कुछ बोला, उसके लिए माफ़ी, और ये रिश्ता हमेशा बना रहे प्यार और मोहब्बत के लिए। My name is Muhammad Abdul Rahman from Kerala. I started my walk from Karnataka, and I'll be walking till Kashmir. It is a yatra for the unity of the people. One thing is that discrimination on the basis of religion, on the basis of caste, and the youth is very angry. The government is not creating any job opportunities. आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। The 2 crore job which Modi have offered is nowhere. Lack of health sector also failed. As a citizen, I can't see this all things because we want a better life, and for a better life, whatever we want to do, we have to step out to take an action against this injustice government. This yatra is very important. He is resolving a lot of problems which the citizen of this country or the people of this country is facing. So you must come forward and be part of this for this all reason. Someone who has a heart for people, especially the poor. सच बोलना पड़ेगा, प्यार बढ़ाना पड़ेगा, नफरत छोड़ना पड़ेगा, और किसी को डरने का नहीं। सब लोग हाथ से हाथ मिलाकर इस देश को बनाएंगे। ये देश रहेगा तो हम रहेंगे। United effort from all the leaders is going to be a game changer. It's a great initiative. It's a people movement, I can say. He is coming all the way to listen our issues, to see our problems. నేను ఒక మహిళగా మహిళల పైన జరుగుతున్నటువంటి అత్యాచారాలన్నిటికీ, మహిళల్లో కూడా ఎక్కువ దాడులు అణగారిన వర్గాలైనటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీల పైన ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. చెప్పుకోవడానికి కూడా భయపడుతున్నారు. చెప్పి వచ్చిన 1-2 కేసులను కూడా రాజకీయ పలుకుబడితో వెనుక వేయడం జరుగుతుంది. రాజ్యాంగ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో, సుప్రీంకోర్టు కావచ్చు, ఎన్నికల కమిషన్ కావచ్చు, అవన్నీ కూడా వాటిని
దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. The wealth whatever created by the Congress has been being destroyed by the present regime, sir. వీడు దళితుడిగానే ఉంటున్నాడు, దళితుడిగానే వివక్షకి లోనవుతున్నాడు, కానీ ప్రొటెక్షన్ మాత్రం అతనికి దొరకటం లేదు. ఒకరికి ఒక విధంగా ఇంకొకరికి ఒక విధంగా లేకుండా మహిళలకి జరుగుతున్నటువంటి అత్యాచారాలన్నిటిపైన కూడా చట్టరీత్యా కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగంలో ఏవైతే చట్టాలు ఉన్నాయో అవి ప్రజాస్వామికంగా అమలు చేయాలని రాహుల్ గాంధీ చెప్పడం జరిగింది. Rahul is a world-class citizen. He has world-class outlook. He is very
भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश नदी आवाज है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा एक तेरा कदम एक मेरा कदम मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली झांको रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन माटी में हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी भरी पार्टी में महंगाई को झुका के मानेंगे बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे हे उन्नति का हाथ बढ़ाना है सद्भाव का साथ बढ़ाना है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा एक तेरा कदम एक मेरा कदम मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली
तूफान उठे मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दी आवाज है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा एक तेरा कदम एक मेरा कदम मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली झांकों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन माटी में हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी भरी पार्टी में महंगाई को झुका के मानेंगे बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे ये उन्नति का हाथ बढ़ाना है सद्भाव का साथ बढ़ाना है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा एक तेरा कदम एक मेरा कदम मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 They discussed issues regarding Grameen banks, particularly strengthening of rural credit and extending of banking services under the public sector. So 40 crore customers are benefited by these Grameen banks, sir. With 22,500 branches, it is a very big rural banking network. Now they are proposing privatization. We are opposing. Rather, we are demanding formation of national rural bank. When a bank say like Grameen gets privatized, Yes, sir. how many of the people who are working will lose their job? The job will be only question of 1,50,000, but 40 crore customers will, the priority sector people are there, all 40 crore. Rural poor. They are 90% of the branches in rural areas. Thereby, it will the objective of the RRBs will be diluted, and the RRBs, the thrust, the focus of rural areas will be diluted. Once a private shareholder comes into the bank, they will close down most of the branches. The services to the rural poor and downtrodden will be affected. They need to be protected under public sector, so they are in profit as a whole. The process of privatization has Started. Just now, up to 49%, the provision has been made. We are very happy. Some national level political leader is taking an initiative to join all the people, all section of the people. We want unity of all the people. Which part of Indian Railways are they privatizing? Railway stations, sir. Okay. Railway workshop, railway medical hospitals, railway establishments going to be privatized. Today, in the Bharat Jodo Yatra, we have met Sri Rahul Gandhi ji. We have explained in detail about the privatization of Indian Railways. In the history of 170 years of Indian Railways, we never seen and we never heard the privatization of Indian Railways. So we are opposing that privatization. When are they planning to do this?
Are they already doing slowly? Yes, sir. Slowly. Who are they giving them to? Big companies or small companies? No, big companies, sir. Ambani, Adani, and all their affiliated companies. They have privatized by the Narendra Modi's government. So Adani is getting railways also? Yes, sir. His private trains already introduced in the Indian Railways. Trains have been introduced? Yes, sir. Adani trains? Yes, sir. Adani. 151 trains. Total 151 trains have been privatized, sir. On that occasion, we have submitted the memorandum to Sri Rahul Gandhi ji, comprising 3 demands. One is against privatization of Indian Railways and न्यू पेंशन सिस्टम को अरेंज करना है, और तीसरा है रेलवे में जो वैकेंसीज है उनको भर्ती करने के लिए हम लोग राहुल गांधी जी से बात हुआ था, टू सेव द इंडियन रेलवेज एंड आल्सो टू सेव द नेशन इंटरेस्ट. My name is Sandeep Bangala in California, San Francisco Bay Area local. I work for Stanford and I'm also a member of Indian Overseas Congress. So 31st I was there, Bharat Jodo Yatra, and naadi oka chinna prayatnam laga I'm distributing around 2,000 copies of this book on Nehru. It is Prapancha Medavula Drishtilo Nehru ఏం మాట్లాడారు నెహ్రూ గురించి. దట్ ఈస్ అ లిటిల్ ఎఫర్ట్ ఐ థింక్ విచ్ ఐ థాట్ ఐ కెన్ కాంట్రిబ్యూటెడ్, బికాజ్ ఈయనే విజన్ వల్లనే ఇవాళ భారతదేశం ఎక్కడైతే ఉందో అప్పుడు. 2017లో రాహుల్ గాంధీ గారు యూసీ బర్క్లీకి వచ్చారు. అక్కడ ఒక 1000 మంది స్టూడెంట్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు. అండ్ ఐ యామ్ టోటలీ ఇంప్రెస్డ్ బై వాట్ హీ సెడ్. ఐ విల్ బి వెరీ అన్అపాలజెటిక్ సపోర్టర్ ఆఫ్ రాహుల్ గాంధీ. ఆ రోజు నుంచి నేను డిసైడ్ అయ్యాను. ప్రపంచ దేశాలలో ఇప్పుడు మేము బయట దేశాలలో ఉంటాం కాబట్టి దేశం మొత్తంలాగా చూస్తాం మేము. సో ఇండియాలో ఏ చెడు జరిగినా కానీ మాకు బాధ అవుతుంది. భారతదేశము 100కు పైగా దేశాలకి తిండి పెట్టే దేశం లెక్క తయారైంది. అటువంటి దేశంని ఇలా అన్నం దొరుకుతలేదు, హంగర్ ఇండెక్స్లో పాకిస్తాన్ శ్రీలంక కంటే తక్కువ పడిపోయింది అనే న్యూస్ చూస్తే బాధ అయింది. సో ఇవాళ ఒక నాయకుని గురించి రాష్ట్రంలో కానీ కేంద్రంలో కానీ మాట్లాడాలి అని అంటే భయపడుతున్నాం. అంటే ఎటు పోతుంది సమాజం? టీవీ ఛానల్ భయపడుతున్నాయి, ఎటు పోతుంది? ఇవన్నిటిని అడ్రస్ చేస్తూ రాహుల్ గాంధీ గారు ఈ పాదయాత్ర తీసుకున్నారు. అలసట అనేది మీకు యాత్రలో నడుస్తుంటే తెలియదు. ఎందుకంటే యూ గెట్ టు సీ సో మెనీ పీపుల్, ఎస్పెషలీ 18, 16, 19, 20, 21 year old పీపుల్ ఇక్కడ భారత్ జోడో యాత్రలో రాహుల్ గాంధీకి తోడుగా నడుస్తుంటే చాలా సంబరం అనిపించింది. कांग्रेस हुकूमत जब थी हम उसको खबर नहीं थी, आज हम पछता रही कि ये बीजेपी हुकूमत जो आने से परेशानियां हो रही. आज का दिन मेरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन दिन बोल सकता हूँ इसको मैं, जो मुझे आज राहुल गांधी जी से मिलने का मौका मिला. उनसे बहुत तफसील में बात हुई. जो 2 लाख की रोजगार की बात कर रहे थे, आज तक भी किसी भी एक बंदे को जॉब नहीं मिला. मैंने इनको ये मेमोरेंडम दिया, इसमें सभी सारे डिटेल है स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट जो वादे करके आई थी, मगर आने के बाद वो सभी सारे वादे भूल चुके. तो स्टेट गवर्नमेंट आने से पहले 2 लाख रोजगार देने की बात करके आई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके आई थी, मगर वो आज तक पूरा नहीं हुआ. मौजूदा जो हालात है इस मुल्क के काफ़ी बद से बदतर हालात है. इस पे थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आम इंसान के ऊपर है. जो लो पॉवर्टी लाइन ले लीजिए, मिडिल क्लास ले लीजिए, वो काफ़ी सफ़र हो रहे हैं इस मुल्क में. राहुल जी ने इस मेमोरेंडम को खास तौर पर पढ़ा है, पढ़ के मुझसे डिस्कशन किया कि हम इस पर गौर करेंगे. तो मुझे उम्मीद है राहुल जी से कि आने के बाद वो हमारा इस मेमोरेंडम को फॉलो करेंगे. फिर से एक बार राहुल जी कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत करेंगी तो हो सकता है ये भारत का बहुत ही अच्छा मुस्तकबिल रहेगा. मेरा नाम रोहित है, मैं यहाँ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखता हूँ. मेरा नाम प्रवीण कुमार है सर. मैं यहाँ पे लाइटिंग का देखता हूँ भारत जोड़ो यात्रा में. मेरा नाम मनदीप है. मैं यहाँ पे पिंक जोन, लेडीज़ की सारी कंप्लेंट्स को हैंडल करना वो मेरे अंडर है. सीआरपीएफ वाले हैं ना, उनको सारा ये देना सारा. हाँ ठीक है अभी करवा दे रहा हूँ. 2 मिनट को दे रहा हूँ मैं आपको. ठीक है
सुबह 3:30 बजे हम उठते हैं, उसके बाद 6 बजे यात्री निकलते हैं। हम डिसमेंटल करके नेक्स्ट लोकेशन पहुंच के अपनी टीम की जो एरिया है आपको पहले कवर करते हैं, यात्रियों को सेफ महसूस होने के लिए। हमारे पास एक एरिया होता है अराउंड 1 लाख स्क्वायर फीट का, जिसकी सारी लाइटिंग हमें करनी होती है। बेसिकली सबसे ज़्यादा इशू है वो है लेडीज़ वॉशरूम का, और वहाँ पे पानी फिल करवाना, उसकी हाउसकीपिंग करवानी, लेडीज़ जोन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी, और उनकी कंप्लेंट्स जो भी होती हैं लेडीज़ की वो सब हैंडल करना, उनको रिजॉल्व करना। यात्रियों के लिए समझो कि हम एक रोज नया गांव बसाते हैं। एक बार भाई एक कंटेनर जोन में आओ और एक बार देखो कि कहीं पर कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। जैसे हम 2 महीने से यात्रियों के साथ हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हमारे एक परिवार है। और हमने ये चीज़ देखी है, जितनी लेडीज़ हैं सब हमको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम उनके छोटे भाई हैं। कोई फेस्टिवल या किसी का बर्थडे होता है, हम यहीं पर ही आपस में सेलिब्रेट करते हैं, तो कोई हमें ऐसा लगता ही नहीं, हम तो एंजॉय करते हुए काम कर रहे हैं। पब्लिक का प्यार देखा, लोगों की हिम्मत देखी, राहुल जी की हिम्मत देखी। 30-30 किलोमीटर रोज वॉक करनी, पब्लिक को साथ लेके चलना, छोटा हो बड़ा हो सबको साथ लेके चलना। इस यात्रा में हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोगों से मिल रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। हम उन्हें लैंग्वेज समझ आए ना है, लेकिन हम उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। उससे हमें एक चीज़ का पता लगा है कि हाँ, अगर कुछ करना है तो हिम्मत दिखाओ, सब कुछ होगा। दांडी यात्रा के बाद आई थिंक ये सबसे बड़ी यात्रा है, और इस यात्रा से बदलाव होगा और 100% होगा, जिसका हिस्सा हम भी हैं, और हम भविष्य में कह सकते हैं कि हम उस रैली का हिस्सा हैं जिसने भारत को बदला है। और इस सफ़र में जो प्यार और मोहब्बत हम आपस में कायम करेंगे वो हमेशा रहेगा। हमारी तरफ से कुछ भी गलतियाँ, कभी कुछ हुई, गुस्से में किसी ने कोई भारत यात्री या किसी ने भी कुछ बोला, उसके लिए माफ़ी, और ये रिश्ता हमेशा बना रहे प्यार और मोहब्बत के लिए। My name is Muhammad Abdul Rahman from Kerala. I started my walk from Karnataka, and I'll be walking till Kashmir. It is a yatra for the unity of the people. One thing is that discrimination on the basis of religion, on the basis of caste, and the youth is very angry. The government is not creating any job opportunities. आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। The 2 crore job which Modi have offered is nowhere. Lack of health sector also failed. As a citizen, I can't see this all things because we want a better life, and for a better life, whatever we want to do, we have to step out to take an action against this injustice government. This yatra is very important. He is resolving a lot of problems which the citizen of this country or the people of this country is facing. So you must come forward and be part of this for this all reason. Someone who has a heart for people, especially the poor. सच बोलना पड़ेगा, प्यार बढ़ाना पड़ेगा, नफरत छोड़ना पड़ेगा, और किसी को डरने का नहीं। सब लोग हाथ से हाथ मिलाकर इस देश को बनाएंगे। ये देश रहेगा तो हम रहेंगे। United effort from all the leaders is going to be a game changer. It's a great initiative. It's a people movement, I can say. He is coming all the way to listen our issues, to see our problems. నేను ఒక మహిళగా మహిళల పైన జరుగుతున్నటువంటి అత్యాచారాలన్నిటికీ, మహిళల్లో కూడా ఎక్కువ దాడులు అణగారిన వర్గాలైనటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీల పైన ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. చెప్పుకోవడానికి కూడా భయపడుతున్నారు. చెప్పి వచ్చిన 1-2 కేసులను కూడా రాజకీయ పలుకుబడితో వెనుక వేయడం జరుగుతుంది. రాజ్యాంగ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో, సుప్రీంకోర్టు కావచ్చు, ఎన్నికల కమిషన్ కావచ్చు, అవన్నీ కూడా వాటిని
దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. The wealth, whatever created by the Congress, has been being destroyed by the present regime, sir. వీడు దళితుడుగానే ఉంటున్నాడు, దళితుడుగానే వివక్షకి లోనవుతున్నాడు, కానీ ప్రొటెక్షన్ మాత్రం అతనికి దొరకటం లేదు. ఒకరికి ఒక విధంగా ఇంకొకరికి ఒక విధంగా లేకుండా మహిళలకి జరుగుతున్నటువంటి అత్యాచారాలన్నిటిపైన కూడా చట్టరీత్యా కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగంలో ఏవైతే చట్టాలు ఉన్నాయో అవి ప్రజాస్వామికంగా అమలు చేయాలని రాహుల్ గాంధీ చెప్పడం జరిగింది. Rahul is a world-class citizen. He has world-class outlook. He is very
तूफान उठे मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दी आवाज है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा एक तेरा कदम एक मेरा कदम मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली झांको रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन माटी में हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी परिपाटी में महंगाई को झुका के मानेंगे हारेंगे बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे लड़ाएंगे हे उन्नति का हाथ बढ़ाना है सद्भाव का साथ बढ़ाना है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा एक तेरा कदम एक मेरा कदम मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली चली चली